अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब हों, ज़िंदगी में कामयाब इंसान बने, तो हर काम को तवज्जो के साथ और बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में करें, मेहनत से करें। मेहनत ही इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाती है। फर्स्ट वीक का होमवर्क क्लास वर्क SST क्लास 5 डे 1 चंद शहरी सियासी हुकूक और जिम्मेदारियाँ बताएं। जमहूरी मुल्क का शहरी होने के नाते वोट देना हमारा हक है, लेकिन इस वोट का सही इस्तेमाल और दुरुस्त अफराद को देना हमारी जिम्मेदारी है। साइंस क्लास 5 डे 1 राइट अ नोट ऑन प्लांट्स and draw a web to show classification of plants kingdom. Plants are multicellular organisms contain green substance called chlorophyll. English class 5 day 1. Why were the Lilliputians able to tie up Gulliver? इसका आंसर है because he fall fast asleep and the Lilliputians were able to tie him during his sleep. अब हम डे 2 क्लास 5 SST की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है डिजिटल शहरी के इखलाक व आदाब लिखें। इसका आंसर है डिजिटल शहरी की जिम्मेदारी है कि टेक्नोलॉजी का दुरुस्त इस्तेमाल करे और इनको मुल्की मफाद पर तरजीह दे, साइबर कवानीन का मुकम्मल ख्याल रखे। Science class 5 name 5 groups of vertebrates and briefly write characteristics of each group with examples. Number 1, fishes lives in water. They have backbone and breathe through gills. Amphibians they can live in water and land. They have backbone, breathe through gills, and as frogs, reptiles live on land. ये live and line नहीं है। Live on land and water, lay eggs and swim in water, have limbs and tail and crawl. Birds live on land. Birds are only animals, have feathers, breed with lungs, lay eggs with shells. And number 5, mammals mostly live on land. Some live in water, covered with fur and hair, use lungs, give birth to babies and give milk. English class 5 day 2 list the things in the passage that prove that Lilliputians were very small. They were small as Gulliver only can feel them moving on their body like ants. They were only 6 inches high. When he shot, many flew to the ground. Day 3 SST अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से बनाए गए कुछ बुनियादी इंसानी हकूक़ लिखें। इसका आंसर है नंबर 1, तमाम इंसान पैदाइशी तौर पर बराबर और आज़ाद हैं। हर फर्द को तालीम हासिल करने का हक है। और नंबर 3, ग़ुलामी और ग़ुलामों की तजारत ममनू है। साइंस क्लास 5 ब्रीफली राइट अबाउट द फॉलोइंग टर्म्स। नंबर 1, vertebrates have a hard, bony internal skeleton inside bodies. They all have a backbone made up of little bones. Characteristics or classification of vertebrates: their habitats, how they move, their body surface, type of respiration, reproduction methods. Number 3, extincts. Extincts is the disappearing of species or endangered species, and conversion, the activities of human beings are causing some species of that animals finishing from the land and water. They are called endangered species. English 5th day 3. What would you do if you wake up and found that you had become a giant? Talk about your feelings. What would or would not be able to do? I would feel strange. I would like to do the many good things for poor. I would not try to harm anyone, though as a giant I can do it. Day 4 SST आपके ख्याल में तनव्वुर और रवादारी से क्या मुराद है? तनव्वुर से मुराद एक माशरे में मुख्तलिफ ग्रोहों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की मौजूदगी है, और रवादारी का मतलब है एक दूसरे के इख्तलाफात को कबूल करना। ये याद रखना कि हम सब इंसान हैं, ये हम है, हम नहीं है।
Science class 5th, therefore, what are flowering plants? Describe their groups with example. The most advanced group in the plant kingdom, they have roots, stems and leaves. There are two major groups based on their seed structure as monocotyledons or dicotyledons. English class 5, what do you think Gulliver will do next? How can you find out whether you have guessed right? He is very fond of voyaging, so he would go to next trip, he would go around and see the next country, he would explore more. ये आपका वीक 1 का 5th क्लास का होमवर्क है जो आपने तवज्जो और मेहनत के साथ करना है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब हों, ज़िंदगी में कामयाब इंसान बने, तो हर काम को